as far as mechanics of writing a thesis is concerned, so to certain extent, in the previous lectures, we discussed many things. So few things, as yesterday I was just looking up MLA style sheet 9th edition. So there are certain new things or brush up of the old things. So we'll discuss in separate lecture the kind of language they have included or the kind of restrictions they have imposed upon the usage of language. To certain extent, we means what happens generally in our regular flow when we are writing a thesis, or in our regular flow, to certain extent we get informal. Even unconsciously, we are not conscious whether we are using this language that we use in informal situations or conditions. So for that purpose, you will have to be very careful about the usage of language, because writing a thesis is something a formal task. We are not supposed to include any kind of term or any kind of phrases that we normally use in our colloquial or informal uses, because when the thesis goes to the external, and if he is writing, if he is reading thoroughly, that is always appreciable. But sometimes some phrases are caught while he is just skimming the text, and then he's looking only the pages, looking through the pages. So he may also come across some of the phrases, the eye-catching phrases. And if those phrases are not formal, they are not accepted in formal speech, so he may underline them, he may encircle them, and then by the time if he is the same person who conducts your external means your YY as an external, so he may point out those things. We have had these kind of experiences. Some of our colleagues, they had this kind of experiences. And in my thesis particularly, so the sir who came to conduct this YY, he encircled properly, means literally he encircled many things, though it was not a negative way, but he encircled, he underlined, and then he started discussing on these things only. So you will have to be very cautious about the usage of language. So about the usage of language, we will conduct yet another lecture. And today, as far as mechanics, they are not the separate or some high profile term. Mechanics are simply the do's and don'ts, and the practical aspects, the theoretical aspects that we have to keep in mind. And one of the aspects is the usage of punctuation. Other, the format, as far as format is concerned, the first page perhaps. So we'll discuss the format of first page. We'll discuss the introductory pages before our main content starts in the thesis or in dissertation. So there are certain formalities. You are very much aware that acknowledgement or preface, introduction, or certificate kind of means that certificate we have to get it produced from the supervisor. So this certificate has also to be attached in the thesis, and the table of content. So these things we will discuss, and slightly we'll touch quotation, though quotation was extensively used in that previous video, quotation and citation. So we'll upload that video again. You may go through, and then if at all you feel that there is a need of telling something, we can again prepare a lecture and then deliver it to you. And so first, let us start this. About all these things, I think I told slightly in the previous lectures. So first of all, what should be the layout? It is applicable to all the pages that we incorporate in our thesis, all the pages. First, the margin. Margin means margin of the page. Page means all the pages. So previously we told that it should be 1 inch from all sides. Or when you type in MS Word, so it is default. It is a default setting, 1 inch from all sides, but you need to double check while you are writing. So perhaps you unconsciously, inadvertently, you change the setting. So sometimes it happens.
sometimes while formatting something or resetting the settings. So there may occur some changes. So for just getting double confident or double conscious of all these things, so 1 inch from all sides. This should be our margin setting, margin of the page, and margin of the text. There are two different things, margin of the page and margin of the text. So as far as margin of the page is concerned, we have to simply go once, and then this will be applicable to all the pages we incorporate in our thesis. Next is our text. What should be the format of the text? Font, you already know that there is no such thing like Times New Roman is the only standard font. There is no such mention in any of the MLA style sheet editions. They only focus on the legibility of the text. You select the text, the font that is legible on the one hand, and then second thing is that that is very much important thing is whenever we italicize the text, whenever we make some portion bold, whenever we separate some text, so it should be legible. In some of the fonts, you may have also come across the thing that in their regular setup and in their italicization, they don't look different. They are almost similar. So we have to avoid those fonts. Otherwise, Times New Roman, it is generally accepted because there are no discrepancies in as far as bold is concerned or italicization is concerned or any other formatting of the text is concerned. That's why we go for it. We go with these kind of fonts. Vardhana is also one of the means a safe safe font. This is more legible than this Times New Roman. So any font you can select. There is no such hard and fast rules for the selecting only Times New Roman. If you feel like some other font is also there, as we are in a generation of updation. So Microsoft also updates many things, many new things. So if you just look in the drop down of fonts, you may come across many new fonts either. So those new fonts can be your font. One of the new fonts can be your font, provided it should be legible. It should be legible and it should give the impression that you are using it differently for bold, for regular, and for italicization. The only thing you have to keep in your mind. So it should be legible only. Next thing, size of the font. Size also they feel that 11 point to 13 point, whatever suits you, whatever suits your requirement or as is suggested by your supervisor. There are two things. In all the MLA style sheet, they have deliberately written means this line that either this or what is suggested by your supervisor. So it should not be controversial. It is not like that we have to use only 11 point. We have to use only 13 point. In between 11 point to 13 point, we can use any. 13, why we are using this 13? Suppose we have chosen some caliber type font. The fonts are naturally smaller. If we tend to choose some font that is naturally smaller in size, so and still we use 11 point, it should be rather smaller. So in that way, we have to make it 13. If we use Vardhana, so Vardhana is slightly bigger. The font size is slightly bigger. So we can do even with 11 point. We can do with 12 points. 13 points would be unnatural in that case. So why this range is given? It is according to your choice of your font. If the font is justified in your legibility, so 11 point will also do or 12 points will also do.
So in between 11 to 13 points, any font size, any font you can choose. Now, as long as this text is concerned, the margin of the text is concerned. In the previous video, we told that it should be left justified. Left justified. We don't have to make it complete justified. This will look unnatural. This will give unnecessary spaces between the words, because it will justify all the words in the single line. So suppose there is some larger word at the end of the line, so it won't take, it will take it in the next line, and then the gap that is produced in the first line will be adjusted in the throughout the line. So unnecessary gaps will be visible in your lines. So complete justified is not recommended here. Complete justified like this one. ये font में आप देखोगे तो this. So this we don't have to use. We have to simply use left. This kind. Left one. So this left margin has to be chosen. Second thing, hyphenation. As far as hyphenation is concerned, I told you that it has to be completely avoided. Auto hyphenation. Auto hyphenation has to be completely turned off. In your settings, you before you start your writing your thesis, all these things you have to keep in mind and then turn it. So as far as margin is concerned, you are very clear, I think. So left justified, auto hyphenation off. This will be the margin of the text. Margin of the page and margin of the text, they are two different things. Next, double spaced. It is also choice based or as recommended by your supervisor. Sometimes they feel that 1.5 and sometimes they use double. Whatever suits you or whatever does not suit you, means it is not a matter of suitability. It is a matter of recommendation by your supervisor. Sometimes some preconceived notions are there prefixed in your mind or in the mind of supervisor. So they may feel conventional. You may feel that the supervisor is conventional. So we have to simply give the honor to his conventionality, whatever he feels. We don't have to argue because these things are not arguable. For slight things or for these things, we cannot or we must not argue with the supervisor. कि सर 1.5 ही रख लेते हैं, क्या जा रहा है? तो क्या तो कुछ भी नहीं जा रहा, आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी क्या जा रहा है? So unnecessary arguing won't be feasible. Sometimes it strikes the ego of the supervisor even. So we don't have to mess up with all these things. So if the supervisor feels that 1.5 space is okay, means 1.5 lines is okay, it is okay. If he feels or she feels that double space is okay, so double space. Where double space is used, I'm telling you, these are the things where means in the next slide we'll telling where mandatorily we have to use double space. Suppose title page. In title page, the average जो स्पेस रहना है वो क्या रहना है? डबल स्पेस इन योर टाइटल पेज. अभी बताएंगे टाइटल पेज के बारे में. Whatever notes you produce in the footnotes, normally we don't do, but somewhere we have to. Somewhere we have to show the notes on the same page. So all such notes, all these notes have to be double spaced. If we give notes in the footnotes of the same page, so they have to be double spaced. When works cited, I think already we covered this portion. So all again एक बार और करवा देंगे उसको. Works cited, all these works cited have to be double spaced. These are mandatory double spaced. As far as the spacing of the text,
वो आपका 1.5 भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, whatever is recommended or suggested by your supervisor. Indentation. Text should be indented. Means first paragraph, means the change, the new paragraph rather. New paragraph should be indented. How it is indented, we told you previously. And in our thesis or when we were doing our PhD, so it was recommended that the first paragraph, the very first paragraph of your page, means your chapter, suppose, it should not be indented, and rather, other than this, the next paragraph onwards, you have to keep them indented. So first paragraph has to be left without getting it indented. You may just go with it, or you may ask your supervisor what to do. We have to make all the paragraphs indented, including the very first one, first of the chapter, or we have to just indent paragraphs from the second paragraph onwards. ये आप कंफर्म कर लेंगे आप एक बार. But second paragraph onwards, this is compulsory. This is compulsory as to give the impression that you are using a new paragraph. And paragraph, why we change the paragraph? It is not a matter of our liking or a choice. Whenever we feel like changing the paragraph, or whenever we feel that the length of the paragraph is justified, अब चेंज कर देते हैं, बहुत हो गया, बहुत बड़ा लग रहा है दिखने में. So there is no such case. Paragraph can be even 1 page long. Paragraph can be 2 or 3 lines long. It depends on the kind of content that you are using in the paragraph. ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पूरा आइडेंटिकल लेंथ होनी चाहिए सारे पैराग्राफ्स की, कोई ऐसा कुछ नहीं है. पैराग्राफ डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट, मींस द आइडेंटिकल काइंड ऑफ थिंग that you are dealing with, when it completes in the previous paragraph, you can change. अगर वो कंटेंट आपका जो सब्जेक्ट मैटर चल रहा है, डील कर रहे हो, that continues throughout, so paragraph can be 1 page long or 2 page long. वो कंटिन्यू भी हो सकता है. नेसेसरीली आपको अननेसेसरीली मतलब पैराग्राफ फॉर इट्स ऑन सेक, चेंजिंग ऑफ पैराग्राफ फॉर इट्स ऑन सेक, ये चीज नहीं करनी. ये सब होती है इनफॉर्मल राइटिंग में होती है. जो पैराग्राफ चेंज करने का कॉन्सेप्ट है, वो आपको यू हैव टू अवॉइड बाय दैट थिंग. सो इंडेंटेशन ऑफ द न्यू पैराग्राफ, और पर्टिकुलरली सेकंड ऑनवर्ड्स, सेकंड पैराग्राफ onwards. Or certain things you can cross check with your supervisor. Okay, this is how we are doing. If you feel that there is something that needs to be changed or replaced or something modified, you can suggest. Otherwise, we can go with this thing. But when you take few pages of your thesis before the supervisor, you encircle or underline this portion to be discussed. वहां पे क्या होता है कि हम चाहते तो बहुत सारा है कि ये भी डिस्कस कर लेंगे, पता नहीं चलता वहां पे. सो पहले से अंडरलाइन करके ले जाओ उनको कि ये चीजें डिस्कस करनी है, बाकी पता चले फिर क्या किया कि आपने यू हैव कंप्लीटेड योर 5 chapters. 5 chapters long thesis you have already written following the pattern that you followed in the first chapter. And now in the 5th chapter, the supervisor notices, अरे ये पैराग्राफ का आपने तो इंडेंट नहीं करा. अब थ्रू मींस 5 chapter अप्रोक्सीमेटली 150 पेजेस, 150 पेजेस की एडिटिंग अब फालतू में करनी पड़ रही है आपको. You have to keep looking all the paragraphs. So in between editing your paragraphs or your pages, somewhere you may miss it. There is also possibility. तो वो चीज ना हो, इसलिए आप whenever you start writing your thesis, in the few pages only, all such things, the mechanics means the font, the size or the margin और इंडेंटेशन, दिस और दैट, जो भी वर्ड में आपको बताई थी, वो सारी चीजें पहले से ही मार्क करके आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर लीजिए कि इफ यू आर ओके विद दीज थिंग्स,
we can go with the same things in our further chapters. Otherwise, we complete the thesis and then at the end you say that this has to be completely changed. So वो unnecessary का burden भी हो जाएगा, frustration भी होती है कि यार फालतू में पहले नहीं बता सकते थे, ये पहले इन्होंने चेक नहीं करा, तो ये हमें खुद से भी उनसे पूछ लेना पड़ेगा. एक बात और भी होती है, when we ask the supervisor these things, so he also feels privileged कि अरे भाई पूछ रहे हैं ये. So ये भी एक एस्पेक्ट है, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. अदरवाइज वो सोचने लगते हैं अरे खुद से खुद ही करे चले आ रहा है ये, तो पता नहीं, फिर बाद में क्या तुम तो होशियार हो, खुद ही कर लो, फिर तुम तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हो. सो ये मतलब समटाइम्स वी हैव टू आस्क फॉर इट्स ओन सेक एंड समटाइम्स वी हैव टू आस्क बिकॉज वी मे नॉट हैव टू just fall in this trouble later on when we complete our thesis or we virtually complete our thesis. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. Space after period. This is mandatorily focused. Sometimes we double space after full stop. Sometimes we space 2-3 times. जो स्पेस बार होती है सबसे बड़ी होती है कीबोर्ड में. अब उसको unconsciously we press twice or thrice. Even we don't know that we have pressed. So वो गैप्स कई बार क्या होता है बहुत जल्दी से दिख जाते हैं. इसलिए ये भी when you complete your sentence, you make sure that it has only single space, and single space should be there. Otherwise, sometimes what happens after the period, you start next sentence right from the period onwards. There is no space left, so spaces have to be left. स्पेसेस के बारे में अभी ये एक पंक्चुएशन का और बताएंगे आपको. इलिप्सिस जब हम यूज करते हैं वहां पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है स्पेसेस के बारे में. When we use 3 dots, 4 dots, what is the specification, what is the meaning, speciality of the 3 dots or the 4 dots, and वो क्या है कि it has to be consistently used throughout your thesis. It is not the one thing, means the thing of usage of once or twice. We have to take it into our consideration throughout our thesis. वो सेल्फ सेम स्टाइल आपका लगना चाहिए. नेक्स्ट है आपकी फिर प्रिंटिंग. प्रिंटिंग में ये बिफोर यू गेट इट प्रिंटेड यू चेक. समटाइम्स what we do, we make changes in some pages, but making some changes in some page disturbs the format of whole thesis. This has to be kept in mind very carefully. You may have also felt this. You may have also come across this problem. When we format our thesis slightly in the few pages, starting pages, the whole format or the page order, particularly page order of all thesis is disturbed. तो वो भी आप whenever you make changes, you consider whole thesis, you cursorily just feel the touch of the whole thesis, whether some pages have been disturbed or not. कहीं ये तो नहीं. 1 second. Hello. So printing is the very last thing when we complete our thesis, and it has to be given to the printer, or we get it printed out ourselves. So before we do, we have to make sure about the changes we have done and the further or just the changes that may have occur afterwards. वो भी हमें केयरफुली देखना होगा. अदरवाइज वो एज इट इज पेज के आगे सारे पेजेस आपके खराब चले जाएंगे. अगर वो एक लाइन का भी स्पेस रह गया उसमें कहीं पर, सारे पेजेस आपके खराब हो जाएंगे, सारा ऑर्डर आपका खराब हो जाता है. सो वर्ड में ये प्रॉब्लम रहती है. When we make changes in some pages and then we give the line space, so it may disrupt the spaces of all the thesis or all the pages afterwards. So this has to be kept in mind very carefully. Next thing. Now this is the first page. Actually, when you go through MLA style sheet, there is no recommendation about the front page, the title page. It is the adaptation. We adopt when our supervisor suggests
the like manner we adopt merely. So there are no official recommendations have been given for the title page. We give because we have to give. So as far as format is concerned, about the title page, when you design the title page, the very first thing, the margin of the page. Margin will be as usual, 1 inch margin from all sides, from here, this 1 inch margin will be left. Whatever we do, even if it is title page or the last page, the bibliography or whatsoever you are doing your thesis, 1 inch margin from all sides will be left ever. Next, sometimes this is the format they follow, other times this is the format they follow. I'm telling you both. Just like we helped one of our colleagues this title page. So here it is, first of all, the title. Here they have written title in the center. So title, and as far as the font of the title, this, there are two possibilities. Like here we have capitalized all the letters. Here up to here we have capitalized everything. And what is generally recommended, we can make it justified like this. The first letter should be capitalized, and the first letter of all major words. Just like here you see University of Delaware. So the capitalization of is not done. It is not necessary. And it is recommended for all the headings as well. Whenever we write or we give heading, so we can make capitalization only of the initials of major words, not all the words. All the words means the prepositions or articles. If smaller prepositions, if the preposition is like between, among, so we can make it capitalized even. But the words like of or in, out, and these words, these articles or these prepositions we incorporate in the heading, they may be left for capitalization. But the major words, the bigger words, the longer words, or the important words in the heading or in the title, they should be capitalized. So two styles are there. One, you can make the entire heading capitalized in caps. It is not capitalized, it is in caps. Okay. And second style is you can make only the initial of major words, important words capitalized, rather than this way. So whatever suits you or whatever your supervisor recommends. Second thing, here they have given the name of their institution in between. Here they have given in the front. So you may ask about it, or you may discuss it with your supervisor, where we have to keep it, in the center or in the upper hand. Like this should be our title of the thesis, and this should be our university. A thesis submitted to Kumaon University, Nainital for the award of the degree of the doctor or Doctor of Philosophy in English. You can check it with your supervisor, whatever they recommend, they suggest. And then here they have not given, but it is recommended that both the supervisor and the candidate, the details of both the supervisor and the candidates should be given on the title page. Supervised by, this is the supervisor detail, his designation, her designation, the college where he or she is working, and the place. And here it is the candidate submitted by. You will write research scholar only until the degree is awarded. So by then you will be there as a research scholar in the capacity of research scholar, and then your college where you are doing your research from. So this is how you can design your title page. This should be your
mean these things should be kept in mind while designing. Sometimes you can design it in your MS Word. Other times some separate applications are there where this can be designed. But I recommend that you design it in MS Word only. Otherwise, the fonts or the margin or the page style, everything is changed when you design it in some other application. पेज डिजाइन पेज मेकर में डिजाइन हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन थीसिस के ऐसा नहीं है कि वी हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड दैट दिस इज हाउ आई डिजाइन. द डिजाइन ऑफ द पेज वोंट मैटर, द कंटेंट ऑफ द थीसिस विल. इसलिए इसको ज्यादा सोचना नहीं है, बस क्या है कि इट शुड लुक डिसेंट, it shouldn't look fancy, it shouldn't look means fantasized or high profile or this or that glamorous. कोई बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपके थीसिस पे दिखना चाहिए, how much glamorous you have been in your research. So this is your title page. Next thing, here are the introductory pages. Introductory pages before we start our thesis, the main content of our thesis. These things have to be kept in mind. I'm showing you the examples of these. First, declaration. Then certificate that the supervisor will give. Acknowledgement. Acknowledgement means wherever you means whatever or whoever you want to acknowledge, to give acknowledgement to. Whosoever helped you in your work, in your research work. And then means if you want to give a vote of gratitude to someone who has been very close to you, who has been very instrumental in your thesis work, who has helped you throughout the work. So those people need to be acknowledged, because research work is not a kind of individual task that we can do all alone on our own. Somewhere or other, we have to take the help of many people, or even the blessings of many people. So for the gratitude's sake, these are the mannerisms only. It feels that we have acknowledged, we are doing some bigger task, we are doing some great tasks. So we should give a vote of thanks, or we should extend our gratitude to all the people who have been in some or other way, directly, indirectly, instrumental in our writing a thesis, or suggesting a thesis, or helping in some or other way, latent or tangible or whatsoever. So this is merely our giving acknowledgement, accepting their gratitude. Then preface. Preface is a kind of introduction that you give about your research work. In your preface, your complete idea should be reflected. Before somebody reads your thesis, he should get the complete idea what you are going to do or what you have done. It is just like a short summary of your research work. It is the vision. It is not exactly the summary. It is the vision that you have or you had before just selecting this topic, writing your thesis, doing your research on this work. So your vision with the clarity should be reflected in this preface. And then the table of contents. This is the table of content. I'm showing you these. This is the thesis. This is the first page. This is how, and you don't have to make it in a border. Sometimes कलाकारी करने वाले कुछ भी करने लगते हैं, तो कोई कलाकारी नहीं करनी इसमें. मैंने पहले बताया था, किसी और एप्लीकेशन से आप इसको मत करिए. सिंपली इन MS Word ओनली इट शुड बी डिजाइन्ड, and there should be no border or no fancy means font. The same font that you use in your rest of the thesis should be used in your title page. ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई और फैंसी कोई कर्सिव टाइप का जो स्टाइल होता है उसको आप यूज करते फिर रहे हो. The important thing is legibility, not your style. So this is your first page, and then
This is the declaration. I certified that the work presented in this thesis is to the best of my knowledge and belief. Declaration means you have not used anybody's source as such without acknowledging. All the details are genuine. You have done your research work with a genuine intent, and you have not taken the help of illegal or unconventional sources. You have not wrongfully just copied somebody else content. You have checked the issue of plagiarism. Everything you have done consciously. This is your conscious work. So you declare, this is your authentication declaration, that I take the responsibility of whatever may goes illegal. So I take the responsibility. This is the kind of declaration you will have to produce. The first page after the title is a declaration. I certified that the work presented in this thesis to the best of my knowledge and belief is original except as acknowledged in the text. So in the acknowledgement, we have already given, in the works cited, we have already acknowledged that these things, these quotations we have borrowed or taken from these sources. So acknowledgement is there. And that the material has not been submitted either in the whole or a part for a degree at this or any other university. This is also our declaration. Sometimes we simply copied the whole thesis as such, but this is not possible in these times, because everything is online. Within clicks, within seconds, it can come out in a scan that this is where the thesis has been copied. So this is also our declaration. I acknowledge that I have read and understood the rules of the university, requirements, procedures, and policy relating to my higher degree research award and to my thesis. I certified that I have complied with the rules and requirements, procedure, and policy of the university as they may be from time to time. Wherever contributions of others are involved, every effort is made to indicate this clearly, with due reference to the literature and acknowledgement of collaborative research and discussion. This work was done under the guidance of Professor this or that. So this is our declaration for being a safer side, or for taking the responsibility of the work that we are doing. Next thing is our certificate. This certificate is given by the supervisor. It is certified that Mr. this or that has worked under my supervision on the topic entitled this. जहां पर भी टॉपिक आप लिखो वहां पे एंटाइटल्ड जरूर लिखना है उसको. टॉपिक मतलब डायरेक्टली ये नहीं कि टॉपिक के बाद में डायरेक्टली आप शुरू हो गए. टॉपिक एंटाइटल्ड, टाइटल टॉपिक एंटाइटल्ड जो भी है ये. His research work is original and true to the best of my knowledge, and he has completed his work within the stipulated time. He has fulfilled the requirement of attendance as per university rules. This is a certificate that gives the impression that this is original work. And then this person is also responsible for the originality of the work. Whatever has been done in his or her supervision. So he is the responsible person, or she is the responsible person. Next, this is our acknowledgement. Acknowledgement can be slightly bigger. It can be 1 page long, 2 pages long. Whosoever needs or requires or deserves mention, whosoever deserves mention or acknowledgement should be there in this page of acknowledgement. So these are some people, some places we have come across, some people who have helped us. This is acknowledgement. And then this is preface. This preface gives your vision. What you want to achieve by this research work, with what vision you started your research work. What could be the changes in the society after your research? What could be the contribution in the field of literature after your research work? So those things should be reflected in your preface.
This is how you can write your preface. In the preface, you may even cite somebody's lines as well, the way he has done. And now this important thing is content. This should also not be in a box or something like that. Don't make it fancy. Keep it very simple. The font, I'm telling you once again, then the kind of font that you use in your thesis should be used throughout, even including these pages. जो भी ये पेजेस हैं इनमें भी वही फॉन्ट वही स्टाइल रिफ्लेक्ट होना चाहिए विद कंसिस्टेंसी. This is how you can design your table of contents. In chapter 1, what is chapter 1, and then page number from page number 8 to 22. This could be done after you have completed your thesis, this portion. This. In the very beginning, you don't do this in the very beginning. You can simply do this and leave it. After you complete your thesis, you are satisfied with the page numbering, you are satisfied with the margin, you are satisfied with the font size, you are satisfied with the space in between the lines. So this will give the solidarity to the text. And when no other means change is required, so the pages number is final, then you can take the pages number and write here range. Okay, one thing here he has missed, this should be n dash range 1 जो हमने बताया था वो आपका n dash होना चाहिए यहाँ पे बिगर 1. ये क्या है यहाँ पे हाइफन है. तो हाइफन ये छोटी छोटी चीज है, यही मैकेनिक्स में हम कर सकते हैं और क्या है. When we are showing a range, this is range page number 8 to 22. So the dash that clearly tells the range is n dash. So n dash, m dash, and hyphen. The distinction should be very clear. So while showing your range, use n dash only. This is m dash, the bigger one, the biggest one, and then it is n dash, and here it is hyphen. So in showing the range, this should not be used, only this middle one. Okay. This is how you can design your table of contents. And heading, as far as heading is concerned, suppose you have made it bold and underlined it. The same style should be carried forward or copied or used throughout your thesis. Lest what happens, here you are not using either bold or underlined. Here you are using something else. Here you have made it italicized. Here you have made it bold. Here you have changed the font. So these inconsistencies should not be there in your thesis. Whatever style you have fixed in your few pages after discussing with your supervisor, the same things, same minutes are followed consistently throughout your thesis. चाहे वो आपके हेडिंग में हो, चाहे वो आपको फॉन्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके साइज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जो हेडिंग्स का स्टाइल हो, व्हाटएवर इज देयर, वो आपका पूरे थीसिस में कंसिस्टेंट होना चाहिए. लेकिन वो कब? आफ्टर यू हैव कंसल्टेड विद योर सुपरवाइजर. पता चला कि बाद में अगर वो चेंजेस कह रहे हैं तो आपकी पूरी की पूरी थीसिस उधेड़नी पड़ती है और उसमें बहुत बार हम मिस कर जाते हैं मैनी थिंग्स. नेक्स्ट, this is how you can start your thesis. The first page, this is a matter of choice. You can design any way you like, in a box or without a box. यहाँ पे कोई ऐसी recommendation कहीं पर भी MLA स्टाइल शीट में नहीं दी है. जैसे he has designed it in a box, और बॉक्स में भी थोड़ी सी और डिजाइन उसने लेआउट. आपको MS वर्ड में पेज डिजाइन का एक ऑप्शन आता है, वो बता देंगे, वहां से आप इसको इजीली डिजाइन कर सकते हो. एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे, याद दिला देना उसको. एंड फिर आपकी ये फिर थीसिस वर्क स्टार्ट हो जाता है. इसको आगे बताते हैं भी. सो इंट्रोडक्टरी पेजेस क्लियर, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, कंटेंट्स बिफोर यू राइट योर थीसिस. Okay, and these things you can write
इन एडवांस, जब भी आपको मौका मिले कोई ना कोई एक दो पेज का ये आप लिख करके पहले लिख इसमें. And then the language should be very much proper because these are your these are the phases. The very first thing that the person will go through your thesis will read all these things. So there should not be grammatical error by all means. There should not be any inconsistency whatever. And as far as changing the paragraph, heading and font, वो ये आपका एक impression है that will cast for the rest of your thesis. यहाँ पर inconsistency नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. Next comes headings. We will have to use headings. Headings, there are separate styles of heading. Any style you can use provided you consistently use it throughout your thesis. देखिए एक बार हमेशा होती है whenever something is choice based. So choice based is used consistently. Once you have made your choice, should be carried forward, should be followed throughout your thesis. Choice का मतलब ये नहीं कि in some phase, in some chapter, you have chosen some other font, some other style, some other heading, some other level of heading, and in other chapter you are using something else because it is a matter of choice. In that way, there is no choice required. Choice is required whenever you are choosing it for the first time. Once you have chosen, should be followed throughout your thesis. Headings. Heading, first of all, heading should be identical. Identical means in wherever you use any heading, it should be identical. Identical means the style should be identical, not the same heading, rather the style. Style should be identical. जो भी आप चाहे लेवल 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, अभी आपको एग्जांपल देते हैं. Why we choose the larger or the bold, or why we choose the smaller one? Smaller, normal, smaller, italicized. It is a matter of prominence or subordination. The main topic, the main heading should give the impression of prominence. That's why we capitalized it, bold it. It should look means right in the very beginning. The moment we look at the page, this heading should be reflected quite apart from rest of the text. So it gives the impression of prominence. And means if it has subheading or individual subdivision. So subdivision should not be in the same heading. Subdivision should not be in the same style. Subdivision should be in either smaller regular or smaller italicized. Otherwise, there won't be any difference between the prominent heading, the main heading, and the subordination. इसको लगना चाहिए आपको. Main heading and then its subheading. They should be in separate styles. अगर वो same style में होंगे, so they won't look natural. We won't be able to make any difference whether we are using it for the prominence or the subordination. वो दिखना चाहिए. This is the concept only. Why we use this. Next, heading. As far as the placement of heading is concerned, so it should be flushed left. Flush मतलब क्या है? It should be completely left. Heading मतलब here rather than here. ये तो पीपीटी की वजह से बना दिया. अगर नॉर्मल आप देखोगे तो वो क्या होगा? हेडिंग here. Flushed left, right in the left, completely left, double spaced. These are the mandatory things. If the heading has 2 lines or 3 lines, heading is bigger, so it should be mandatorily double spaced. Then it is never indented. Heading आप use करते हैं, so
वो कभी भी इंडेंटेड नहीं होता। इंडेंट आपका पैसेज पैराग्राफ ही हो सकता है, ये भी चीज है। दूसरी चीज सेंटर्ड, जस्ट लाइक दिस इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस। आपका टेक्स्ट वाले जो हेडिंग्स होंगे वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। इंट्रोडक्टरी पेजेस वाले आप कर सकते हो, जो भी करके दिखाए थे, लेकिन जो आपके टेक्स्ट के होंगे, इन बिटवीन द टेक्स्ट जो मेन कंटेंट है आपका, वो इट शुड बी लेफ्ट, यहां से पेज है तो लेफ्ट डबल स्पेस्ड, प्रोवाइडेड डबल स्पेस की कभी नौबत आएगी नहीं, फिर भी कभी अगर होता है तो इट शुड बी डबल स्पेस। डबल स्पेस का कभी आएगा व्हेन द हेडिंग इज 2 लाइन लॉन्ग, 3 लाइन लॉन्ग, इतने बड़े हेडिंग होते नहीं। इट इज नॉट इंडेंटेड, it should not be written from here. Okay, not indented, double spaced, not centered। ऐसे भी नहीं है कि हेडिंग आप यहां पर फिर टेक्स्ट में यहां पे यूज कर रहे हो, ये भी रॉन्ग प्रैक्टिस है। ठीक, अभी ये बताया था टाइटल केस। टाइटल केस जो भी बताया था, या तो आपके वो फ्रंट पेज पे हो सकता है, टोटल कैपिटलाइजेशन, कंप्लीट कैपिटलाइजेशन कैन बी ओनली इन द टाइटल पेज। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे भी आपके सामने चॉइस है, आप नेचुरल रखिए उसको, ओनली द इनिशियल शुड बी मेड कैपिटल, और ओनली ऑफ द मेजर वर्ड्स, नॉट ऑफ ऑल वर्ड्स। So title case capitalization, major words only the major words, rather I mean except means leaving prepositions, smaller prepositions और articles, उनको करने की जरूरत नहीं। Next important thing is no heading should be followed by a period, full stop। हेडिंग के बाद में कोई फुल स्टॉप नहीं लगना। हेडिंग के बाद में अगर ज्यादा से ज्यादा लग सकता है तो आपका वो कॉलन लग सकता है, इफ इट इज द नीड। इसके बाद में डैश लग सकता है। अब अगर आप देखोगे कि विच वन, डैश और कॉलन दोनों हेडिंग के आगे आप लगाते हो, इट गिव्स द इंप्रेशन दैट यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग आफ्टरवर्ड्स। हेडिंग के बाद में कॉलन और डैश लगाने का मतलब ये होता है that you are going to explain something afterwards. But what is the difference colon and dash? जब दोनों लग सकते हैं तो दोनों में से कोई एक क्यों लगाएं? In our thesis, why we should necessarily use this dash or colon? It is a matter of formal or informal. Colon is formal, and as such in our thesis we would prefer this colon. Dash is, this dash is informal, so we would avoid dash. In notes making, suppose we are making notes, वहां पे आप dash खूब यूज करिए। Making notes is completely informal thing. Notes are made for our own own purpose only. Mates are not for other people or not for public. So here you can use. The function is the same. So in headings, sometimes we need to explain something. So we may use this colon if there is a need. ऐसा नहीं कि ये सब लगाना हमें अच्छा लग रहा है तो हम लगा के छोड़ेंगे इसको। अगर नीड है वहां पे, कभी आपको सुपरवाइजर कहते हैं कि भाई यहाँ पे कॉलन भी लगाइए, तो कि यहाँ पे कुछ लगाइए, तो आप वहां पे कॉलन ही लगाओगे, सेमी कॉलन नहीं लगाओगे। ये पहले बताया था, सेमी कॉलन एंड कॉलन में कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ नाम में दोनों के कॉलन आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। दे डोंट बेयर एनी सिमिलैरिटी, एनी रिलेशनशिप इन एनी वे। रिलेशनशिप कहां पे होगी? एज फार एज यूसेज इज कंसर्न। यूसेज में सेमी कॉलन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग एंड कॉलन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। Colon can be replaced at all if it is, so it can be replaced by dash, but then it will make the speech informal. When we are writing a thesis, so it is a formal task, so we have to make it formal. So whatever sign, whatever kind of language gives the impression of formal or formality,
so we'll have to use that only. चीजें एग्जिस्ट सब करती हैं, ठीक। नेक्स्ट है, हाँ, तो नो पीरियड एट द एंड, कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ये रही हेडिंग के एग्जाम्पल देते हैं। These level 1, level 2, level 3, level 4, what these are? आप MS वर्ड में देखोगे तो राइट कॉर्नर में अपर हैंड आपको हेडिंग्स का एक मिल जाएगा, हेडिंग का ऑप्शन मिलता है। सो वहां पे आपका नॉर्मल एक होता है, नॉर्मल, फिर आते लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वट एवर यू चूज। नॉर्मल मतलब देर इज नो हेडिंग एट ऑल, जो नॉर्मल हेडिंग है, जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो। लेवल 1 क्या होता है? बोल्ड एंड नॉर्मल कैपिटलाइजेशन। नॉर्मल कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ओनली ऑफ द इनिशियल्स, दिस इज नॉर्मल कैपिटलाइजेशन। फुल कैपिटलाइजेशन मतलब ऑल द वर्ड्स, all the letters, all the letters are capitalized, this is full capitalization, and this is normal capitalization. So level 1 is preferred, level 1 is preferred for the prominence. When we give the subheading, so subheading can be given in label 2. Label 2 can be simply, it is bold and it is normal. Normal style, this is bold style. Regular, normally regular, regular bold, regular bold italicized. And label 2 can also be label 3. This is the same thing. The only difference is this is italicized. And up to level 4, we can choose up to level 4. बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपका लेवल 1 विल डू, और लेवल 2 और लेवल 3 में से कोई एक, यही है। लेवल 2 में सिर्फ क्या है? 13 पॉइंट्स। आपको 13 पॉइंट्स का नहीं करना। सपोज यू हैव चोजन 12 पॉइंट्स फॉर योर टेक्स्ट, सो आपके हेडिंग में भी 12 पॉइंट्स का ही रहेगा। नेसेसरीली आप ये नहीं कि इसको 14 पॉइंट्स का कर दो। प्रोमिनेंस कहां से दिखेगी? इसके बोल्डनेस से। हाउ इट विल लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट? बिकॉज यू हैव मेड इट बोल्ड, बस इतना फर्क दिखेगा, ठीक, वो सेपरेट हो जाएगा। तो आप हेडिंग ज्यादा हम यूज नहीं करते थीसिस राइटिंग में, लेकिन फिर भी जब यूज करना पड़ेगा तो कंसिस्टेंटली आपको एक ही स्टाइल फॉलो करना। जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग, ये लेवल 1 मतलब बोल्ड, एंड देन दिस इज लेवल 2 वन वर्जन, दिस लेवल 2 वन वर्जन, लेवल 2 सेकंड वर्जन। वन वर्जन मतलब all the words in that style we normally don't read or don't use, we use this one, या तो this one या this one. So level 1 this and level 2 this, इसको आप मानिए, इसको छोड़िए। फिर लेवल 3 ये इटैलिसाइज्ड है, तो आपके इटैलिसाइज्ड भी हो सकते हैं। ऐसे ही एयर पॉल्यूशन में सेकंड ये आपका नॉर्मल बोल्ड, और फिर आपका ये। तो लेवल 1 और लेवल 2 आप चूज कर सकते हो, और कंसिस्टेंटली आपको वही यूज करना है। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर हेडिंग्स। Now it comes to text styling. स्पेलिंग, टेक्स्ट स्टाइलिंग में सबसे पहली बात है स्पेलिंग। You may come across the variation in the style as far as American English is concerned or British English is concerned. Which style you are choosing, there should not be any mixture or amalgamation of both.
Sometimes you use the spelling of color, this. Sometimes you simply use this. In one chapter 5 times you have used this one, in other chapter 5 times you have used this. So this inconsistency should be strictly avoided. जो स्पेलिंग्स में जो आपका आता है, कई बार ये होता है ना, जेशन और जेशन, कैपिटलाइजेशन. So there are the possibilities that it is S or it is Z. जो भी स्पेलिंग आप चूज करते हो उससे सिमिलर सारी थीसिस में वही रहनी है. ये नहीं समटाइम्स कैपिटलाइजेशन में आपने एस यूज कर लिया, अदर टाइम्स कैपिटलाइजेशन में आपने जी यूज कर लिया, जेड यूज कर लिया. तो वो कंसिस्टेंट, स्पेलिंग में भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. कौन सी स्पेलिंग में जिनमें कंफ्यूजन रहता है, सारी स्पेलिंग में तो आपको कोई मतलब ही नहीं है. फॉरेन तो फॉरेन ही है, चाहे अमेरिकन में हो चाहे फॉरेन में हो या किसी और लैंग्वेज में हो. इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में पर्टिकुलरली कंफ्यूजन कहाँ होगा, सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, इसमें कंफ्यूजन रहने वाला है. वो क्यों रहता है, आप एम एस वर्ड में टाइप करते हो, एम एस वर्ड किसकी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है, अमेरिका बेस्ड. ठीक, अमेरिका बेस्ड है, जो उनको डिफॉल्ट सेटिंग में उन्होंने रखा हुआ है वो किसको, अमेरिकन इंग्लिश को रखा हुआ है. हमें कौन सी फॉलो, हम नॉर्मली कौन सी फॉलो करते हैं, ब्रिटिश. एंड वी स्विच फ्रॉम ब्रिटिश टू अमेरिकन अनकॉन्शियसली, इवन वी डोंट नो when we have shifted. But in our thesis we have to be very cautious. ये शिफ्टिंग आपकी इनफॉर्मल स्पीच में चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर कुछ भी यूज करो. अपनी एक नई इंडियन इंग्लिश जो आजकल है उसको यूज कर सकते हो, लोकल इंग्लिश बना सकते हो कोई भी. लेकिन एज फार एज राइटिंग अ थीसिस इज कंसर्न, सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. आप कलर यूज कर सकते हो, ये वाला कलर यूज कर सकते हो, बट इट शुड गिव द इंप्रेशन दैट वेयर एवर यू हैव यूज दिस कलर, द स्पेलिंग ऑफ दिस हैज बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड, ओनली दिस स्पेलिंग. तो वो ठीक है. गलत सिर्फ कब होगा, गलत इसमें और इसमें नहीं होगा कि आपने ये कलर ये वाली क्यों यूज कर ली, ये वाली क्यों यूज नहीं करी, कि यहाँ पे यूज कर ली, यहाँ पे ये यूज कर ली, तो क्या कर रहे हो आप. सो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द यूसेज ऑफ ये स्पेलिंग्स. तो ये कब आएगा, जैसे जेशन वाला आता है, ये कलर वाला आता है, ऑर्डर, ये वेलर, इस तरह की जो स्पेलिंग्स बहुत सारी ऐसी हैं, आपके एमएस वर्ड में टाइप कर दोगे अंडरलाइन आ जाएगी रेड कलर की, आपको लग गया पता नहीं स्पेलिंग तो यही लिख रहा हूं मैं और हमने यही पढ़ी है और पता नहीं गलत क्यों दिखा रहा है ये. तो हो सकता है कि वो इस तरह का केस भी हो वहां पर. और आप जो एक अंडरलाइन वाली एक क्वालिटी क्या होती है, द अंडरलाइंड वर्ड, रॉन्गली अंडरलाइंड वर्ड, मतलब जो एमएस वर्ड में रेड कलर की जो अंडरलाइन आती है, राइट क्लिक करोगे तो उसमें उसका सब्स्टिट्यूट नहीं आता रेड कलर वाली का, क्योंकि वो गलत है इसलिए. तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप केयरफुली, जब व्हेन यू आर रिव्यूइंग योर थीसिस, आफ्टर रीडिंग मींस आफ्टर राइटिंग योर थीसिस, व्हेन यू आर रिव्यूइंग, और रिव्यू आप रेगुलर इंटरवल पे करिए. सपोज यू हैव रिटन 5 पेजेस, सो 5 पेजेस से अब नेक्स्ट तब बढ़िए जब 5 पेजेस की बढ़िया से आप एडिटिंग कर लो. If you feel that after completing my thesis I will review it, I will re-edit it, तो वहां पे you may leave many things. कोई दूसरा करेगा तब उसकी नजर में आएंगे, हमारी खुद की गलतियां बहुत कम नजर में आती हैं. नॉर्मली हमें लगता ही है कि यार अब हमने लिखा है तो क्या गलती होगी, तो नॉर्मली नहीं आते. और हो सकता है वी डोंट कंसीडर इट अ मिस्टेक, जो मिस्टेक कर रहे हैं perhaps we don't consider it a mistake, we don't know whether it is a mistake, so it won't come to our notice. So उसका लिए क्या है कि आप एक बार दूसरे, आप लोग आपस में इतने ब्रिलियंट लोग हो, आपस में भी एक दूसरे की ये थीसिस आप रिव्यू कर सकते हो. उसमें ऐसा नहीं होगा कि ये एक इसने मेरी थीसिस चुरा ली, इसको मैं क्यों दूं. आपकी थीसिस दूसरे की थीसिस बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होगी, उसमें कुछ ऐसा प्लेजरिज्म का कुछ नहीं होगा, कॉपी पेस्ट करने का कुछ नहीं होगा. हाँ, ये फायदा जरूर मिल जाएगा आपको कि सर्टेन वे
the other candidate may notice many mistakes. Certain way you may notice many mistakes in their thesis. So वो helpful होगा. और रेगुलर आप थीसिस को रेगुलर रिव्यू करोगे तो ज्यादा अच्छी होगी, rather than after completing your thesis entirely and then you review it, so you may miss many mistakes and those mistakes will be understood by the expert only and by then this will be beyond your control. वो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उसमें. Even sometimes the supervisor may also not notice these mistakes because he may or she may hurriedly read. कोई जरूरी नहीं है. If the person is rather busy, so he or she may not be able to read your thesis as thoroughly as you expect him or her to be. तो उसके लिए भैया अपना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है. सुपरवाइजर ही है, मतलब ही इज नॉट अ राइटर ऑफ थीसिस. And after everything, if your thesis is rejected, so supervisor won't take the responsibility. They will simply ignore it कि भाई हमें नहीं पता, लिखो दोबारा लिखो, क्या कर सकते हैं, तुमने करा होगा. So वो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए ये सारी चीजें आप पहले बीच बीच में कॉन्शियस रह करके करोगे तो ठीक. तो सबसे पहले ये स्पेलिंग की कंसिस्टेंसी. क्यों कंसिस्टेंसी? बिकॉज ये आपका अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश का स्विचिंग बिटवीन दिस टू लैंग्वेजेस. ये हमारे सामने जो वर्ड में आएगा वो अमेरिकन. उसके लिए आप क्या करिए, लैंग्वेज में एमएस वर्ड में जाकर के लैंग्वेज में डिफॉल्ट सेटिंग में आप ब्रिटिश इंग्लिश को कर दीजिए. तो फिर ये इस तरह की ये इनकंसिस्टेंसी आएंगी नहीं. अगर आपने डिफॉल्ट सेटिंग नहीं चेंज की तो वो अमेरिकन ही रहेगी और फिर वहां पर दिक्कत हो जाएंगी. आप एप्पल के किसी प्रोडक्ट में यूज कर रहे हो, आई मैक यूज कर रहे हो या फिर कोई लैपटॉप यूज कर, नोटबुक यूज कर रहे हो, तो वहां पर उनकी डिफॉल्ट लैंग्वेज ही क्या होती है, अमेरिकन होती है, बिकॉज दे आर अमेरिकन बेस्ड कंपनी. वो सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, ब्रिटिश इंग्लिश हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली कन्वेंशनली वी हैव बीन यूजिंग ब्रिटिश इंग्लिश और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टाइल ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश वी विल बी एडजस्ट. तो ये भी चीज है. ठीक, अब आती है दूसरी चीज, some foreign words. Suppose you are incorporating some foreign words in your thesis. Foreign words should be exactly written the way it is there in its native language. जो accepted spelling है उसकी, उसी लैंग्वेज में, नेटिव टंग में, मॉडिफाइड तरीके से नहीं. You cannot modify the foreign words. फॉरेन वर्ड्स के साथ में एक क्वालिटी रहती है, द प्रोनाउंसिएशन एंड द स्पेलिंग. They need to be used the way they are used in their native setting. ऐसा नहीं कि आप उसको इंडियन नेस यानी कि अपने अपने लैंग्वेज की तरह से उसको प्रोनाउंस करते हो, या जो आपको समझ में आ रहा है वो प्रोनाउंस करो. Why we use different pronunciation for some words? Because they are pronounced so. And this is also applicable in their writing, in their spelling as well. तो अगर आप डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हो, मीन्स फॉरेन वर्ड्स यूज कर रहे हो, एंड देन दे आर यूज्ड डिफरेंट वे, सो यू हैव टू यूज इट डिफरेंट वे. अभी मैं बताता हूं आपको कि कई बार आप जैसे स्पेनिश वर्ड्स यूज करते हो, कोई फ्रेंच वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक, स्वीडिश वर्ड यूज करने हैं. सो समटाइम्स देयर आर टू डॉट्स ऑन दिस वर्ड. अब ये एमएस वर्ड में टाइप करते हो, टू डॉट कहां से लाए भाई? चलिए स्पेलिंग तो लिख ली, लेटर्स तो लिख लिए, बट दोस टू डॉट्स वो नहीं आ पा रहे, आप चाह करके भी नहीं ला पाओगे. तो उसके लिए अभी मैं ये वाली यहां से बताता हूं आपको, कहां से आप उसको रेगुलर एज इट इज पिक कर सकते हो, रेगुलर एज इट इज कॉपी कर सकते हो. फॉरेन वर्ड्स, जहां पे फॉरेन वर्ड्स की बात है, सो फॉरेन वर्ड्स शुड लुक फॉरेन वर्ड्स, जो भी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने थीसिस में. और यू विल हैव टू यूज मैनी फॉरेन वर्ड्स. सपोज यू आर साइटिंग सम कोटेशन, और सपोज योर नॉवल, जो कोटेशन ऑफ योर नॉवल, and then the writer has used some foreign words, he has or she has incorporated some foreign words. उसने तो वहां पे ऐसा यूज कर लिए. अब आप while typing your thesis you are not able to make it that way, make it look that way. तो वहां पे आपको कैसे आएंगे अभी बताते हैं.
दूसरी चीज क्या है, while using the source for your spelling, use single dictionary. सिंगल डिक्शनरी मतलब जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी है, एक को ही फॉलो करिए। आप तीन चार डिक्शनरीज को साथ साथ कंसल्ट करके फॉलो करोगे, देयर कैन बी द कंफ्यूजन, देयर विल बी सर्टेनली कंफ्यूजन, स्लाइट चेंजेस आर देयर आर पॉसिबल इन वेरियस डिक्शनरीज। सो वो चीज आप देखिए। फॉरेन वर्ड्स, दे उनको आपको, क्योंकि ये रोमन स्क्रिप्ट है हमारी, लैटिन स्क्रिप्ट है इंग्लिश की, तो इसमें आपको द वे दे आर रोमनाइज्ड, दे आर यूज्ड, दे आर रिटन, दे आर स्पेल्ड, वो आपको यहाँ पे हम बताते हैं टेबल से, कहाँ से आप सेम वर्ड्स यूज कर सकते हो, सेम कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये इसके आप इसको नोट कर लेना, LOC डॉट, ये पूरा, ये कहाँ पे मैं सेंड करूँ इसको, चलिए मैं किसी को एक को सेंड कर दूंगा ये लिंक जो है। सर चैट बॉक्स में आप कॉपी कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ये भी ऑप्शन है, मैं तो भूल ही गया था चैट बॉक्स भी होता है हमारे इस पोर्टल में। दिस लिंक here, from any language you can choose, and then you directly copy the font, the concerned character, and then you can use, just like mm, these many languages are given. Suppose we are using किस लैंग्वेज के, पर्शियन, पश्तो, रशियन सपोज करिए। Now some Russian word we are using, we have to use because the writer has used. I mean, normally when we use ourselves, we don't need these kind of things. But when we quote and then the writer has used some foreign words and we have to incorporate the same word, तो वहां पे फिर कैसे लिखा जाए उसको? I was talking about this term, suppose. अब E, as far as this E is concerned, you can very well write it. ये तो easy लिख दिया। अब ये ऊपर के डॉट कहाँ से लगेंगे भाई? अब लगाते रहो उनको, डॉट कहाँ से लगाओगे? So it is better you just consult this thing, and then what you need to do, you simply copy it and then you can paste. आ गया आपके चैट बॉक्स में सिंबल इसी तरीके से। सो किसी भी तरह का आपको सिंबल बनाना है वहां पे जो फॉरेन लैंग्वेज में यूज होता हो, अब ये बनाना है। अब बनाते रहो, ये कहाँ से बनाओगे? ये तो हमारे यहाँ दिवाली पे दिए का काम करेगा ऐसा। अब पता नहीं, बनाते रहो इसको। तो ये है, ये चेयर ज्यादा लग रही है, कोई कैरेक्टर कम लग रहा है। अब बनाते रहो इनको, कहाँ से बनाओगे? ये उल्टा एन बना दिया, आप इनको सोचते रहो कि ये तो उल्टा एन बनाया है इन्होंने, गलत कर दिया। हम इसको सही बना रहे हैं, हम कलाकारी कर रहे हैं, इसको सीधा कर रहे हैं। तो ये थोड़ी चलेगा भाई। अगर आपको इस तरह की नीड पड़ती है, पड़ सकती है, तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? वो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है आपके इस वाले, वहां पे आके कोई सी भी लैंग्वेज चूज करके आप उसको कर सकते हो। उर्दू की कोई सपोज करिए आपको कोटेशन यूज करनी है, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो आप। अब आपको नहीं आ रहे, वो लिखना ही नहीं आ रहा है, वहां पे टाइप करना ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से करोगे? ठीक। कोई और किसी की फेमस लाइन कोट करनी है, लाइन है फॉरेन लैंग्वेज में, एज इट इज आपको यूज करनी है, संस्कृत में यूज करनी है, तो कहाँ से करोगे? तो वो यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये दिस इज दिस इज द वेबसाइट।
then एज फार एज कॉमर्स, द यूसेज ऑफ कॉमर्स, ये एक सेपरेट वीडियो भी, सेपरेट लेक्चर में करा देंगे पूरे, मतलब पंक्चुएशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सेपरेटली करा देंगे, ये आप रनिंग उसमें देख लीजिए. Commas because commas are sometimes they feel that wherever you feel like using a comma you use. कुछ नहीं, कॉमा ही लगा दो चलो. तो अब ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं तो कॉमा लगा दो चलो, ऐसा थोड़ी काम चलेगा. फॉर्मल थीसिस है भाई, वो फॉर्मल राइटिंग है. सो वहां पे इवन अ पीरियड, फुल स्टॉप, इट मैटर्स अ लॉट. फॉरगेट अबाउट यूजिंग ए कॉमा और सेमीकोलन और एलिप्सिस. इनके बारे में कम से कम कॉमास, सेमीकोलन, कॉलन, इलिप्सिस जितनी फॉर्मल हैं, फॉर्मल पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनको तो कराएंगे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है. खैर यहाँ पे थोड़े से में कर लीजिए आप. कॉमास इन द टेक्स्ट वेयर वी हैव टू यूज नेसेसरीली when we are using compound sentence, and then compound sentence, you know very well, two parallel clauses. When we use two parallel clauses, two independent clauses, join with the help of some coordinating conjunctions like and, or, but, nor, for, so, yet. देखिए confusion कब होता है. These very words can be used as prepositions. Sometimes they can be used as a preposition. Sometimes they can be used yet means as an adverb. इनमें से कुछ वर्ड्स एडवर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं, प्रपोजिशंस की तरह भी यूज होते हैं. While we use these words as prepositions, we don't require the usage of comma. But when we use these words as conjunctions, these are coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions make compound sentences. And in the speciality of these conjunctions, that they are always preceded by a comma. We use some sentence, then we use this word. He and his brothers are doing this, going there. This sentence is compound or simple. These two sentences, which one is simple and which one is compound? This one is absolutely simple because these two pronouns are used with the help of and. It makes simply subject. He and his brothers. This is a noun phrase, rather pronoun phrase. So this becomes our subject, merely subject. And since one subject, this phrase is subject, and then this is followed by a verb, and then this verb simply. So subject and predicate, so it is simple one. Wherever means we have to be very cautious about the usage of these words. The place they are used at will define or determine whether they are used as a conjunction or as a preposition or as an adverb. सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं बहुत बड़े खतरनाक होते हैं. ये हमें तब पता चलेगा जहां पे ये यूज किए हुए हैं. If we use them with a prefix knowledge क्या होती है कि and is always a conjunction, but is always a preposition, या but is always a conjunction. And now but is shown before you used as a preposition, and then you consider it to be a conjunction. वहां पर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. Whether but is a conjunction or a preposition will be defined by the place it is used at. कभी भी आप लैंग्वेज डील करते हुए आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि उस गिवन कॉन्टेक्चुअल, मतलब द यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स इज प्योरली कॉन्टेक्चुअल. जहां पे दिए हुए हैं वहां पर इसकी प्लेस क्या है, रादर देन व्हाट वी नो इट्स प्लेस इज. तो वहां पे ये खतरनाक हो सकते हैं. यहां पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं है, सिर्फ कंजंक्शन है. कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, two different things. There are two different things. Coordinating conjunctions means it joins two clauses, and conjunction it joins two words.
two words can make a sentence, means a subject, a phrase. A phrase can work lonely as a subject, as an object, as a complement. It does not make the sentence compound. Whereas this sentence, look at this sentence, he gave this and followed. Subject is single, and then it takes two verbs. One is gave and then second is followed. So two different words, two different actions are being done by the same person. So there is a distinction between the actions. So this is a separate clause. He gave this can be individual clause as well. This is entirely individual clause. If we remove this rest of the sentence, this one, still it is a meaningful sentence. And look at this. He followed the thing over and over. It is also individual clause. It is also parallel clause. But these two clauses have been clubbed with this conjunction. So this conjunction is a coordinating conjunction. So when we use coordinating conjunction, it should be necessarily be preceded by a comma. Yeah. This is what is our concern here. ये आप पूरी राइटिंग, थीसिस राइटिंग में ये कॉमा, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी वो पंक्चुएशन ही रहेंगे पूरी थीसिस में. Punctuation, the usage of punctuation can make or mar your thesis. It can spoil your work, it can spoil your labor, or it can give the best of impression. पढ़ने वाले को लग जाएगा कि यार हाँ इसके the way you use punctuation marks reflect your mastery of your language. Words को use करने से mastery नहीं आती. The way you use punctuation marks और sentence structure, उससे पता चलता है that you are master of the language. एक तो ये चीज रही. Next, between coordinating adjectives. Coordinating adjectives कब आते हैं? When two or three adjectives qualify the same noun. Take this phrase, swampy wide delta. Noun कौन सा इसमें? Delta. This is noun phrase. Delta is the head word. Swampy and wide, they are qualifiers, adjectives. Two adjectives have been placed before delta. So these two adjectives, they qualify the same thing in different way. Swampy does not qualify wide, and wide does not qualify delta. देखिए ये कभी भी क्या होता है, an adjective. An adjective can never qualify yet another adjective. Adverb can qualify adjective, but adjective can qualify simply a noun. अगर दो adjective साथ में रखे हुए हैं तो it does not mean that one first adjective qualifies other one, second one. These two adjectives, they qualify delta in a separate way. Swampy delta, wide delta. So this is this usage is called coordinating adjectives. So wherever we use coordinating adjectives, means two or three adjectives before a noun, they should be separated by a comma. कॉमा के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको पंक्चुएशन वाले में बताएंगे. ये तो एक बस रनिंग में आ रहा है, यहाँ पे एक माइंड में रहना चाहिए आपके. तो ये स्वैम्पी वाइड, ये चीज क्लियर हो रही है. ये जब नाउन फ्रेज में काम आएगा आपकी, व्हेन एवर यू आर यूजिंग नाउन फ्रेज, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन से क्वालिफायर्स कितने हैं. नाउन फ्रेज में, नाउन फ्रेज बड़ी खतरनाक चीज होती है, उसमें आपके कई सारी चीजें नाउन फ्रेज बनाते हैं. डिटर्मिनर, आर्टिकल, सॉरी ये एडजेक्टिव, आर्टिकल तो यहीं पे आ जाता है, आर्टिकल सेपरेट भी ले सकते हो. आर्टिकल, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव प्लस नाउन. अब आर्टिकल, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव्स प्लस एडजेक्टिव्स प्लस नाउन, ये भी आपकी नाउन फ्रेज हो सकती है. सो दिस
adjective plus adjective plus adjective. This is the example of coordinating adjectives. All these adjectives, अगर आप वहां पे कॉमा नहीं लगाते, so it will give the impression that swampy qualifies white and white qualifies delta. There is no such case, because adjective can never qualify yet another adjective. Adjective can qualify only a noun. So these two adjectives qualify delta this noun separately. Swampy delta, white delta. Okay. अब इसको अलग अलग लिखने की बजाय आपने क्या किया, स्वैम्पी वाइड डेल्टा. ठीक, तो यहां पे एक आपका मैंडेटरी है. नेक्स्ट है पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस. पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस, व्हेन वी पुट some chunk or some phrase, some clause in between two commas. So commas are necessarily used in order to give the impression that we are using in different way. Parenthetical expression का मतलब क्या होता है, बताइए कोई. Why we use parenthetical expression? And this expression can be a clause, a phrase, or merely a word. Parenthesis जो होते हैं ना, this is additional information. Additional information insert in between the sentence structure so as to make it look laconic, using few words as possible. But the other quality of parenthetical expression is that they are not the integral part of the sentence structure. If we remove this part, sugar for example is not the integral part of the sentence structure. Food is not something and food is not. Okay, so this part, sugar for example, can be easily removed without affecting the structure of the sentence. जो स्ट्रक्चर सेंटेंस में इजीली रिमूव की जाती है विदाउट अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, होल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वो आपकी कौन सी होती है, पैरेंथेटिकल, ये फ्रेज या पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं. तो वो जब भी आप यूज करोगे, सो दे शुड बी इन बिटवीन, प्लेस्ड इन बिटवीन टू कॉमास, और इट कैन बी वन कॉमा if it is used at the end. Parenthetical expression can be frontal. The position of parenthetical expression can be frontal, medial and end. कहीं पे भी यह हो सकता है. मीडियल है तो फिर टू कॉमाज में, एंड है तो कॉमा से, ये एंड से पहले, फ्रंट है तो कॉमा ये वर्ड के बाद में. ये है किसी भी तरीके से. नॉर्मली हम मिडिल में रखते हैं, एंड में रखते हैं, फ्रंट में कम रखते हैं. So wherever we use this parenthetical expression, we will have to separate it with the rest of the sentence structure. लगना चाहिए parenthetical expression दिखना चाहिए, वो आपका कॉमा से ही दिखेगा. ये हुआ. नेक्स्ट, with long introductory phrases. लॉन्ग इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, कई बार क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉज भी हम यूज करते हैं. सो अगर वो एडवर्ब क्लॉज या इंट्रोडक्टरी फ्रेज है कुछ वर्ड्स की, उसको आप सेंटेंस में एज ए ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. बट व्हेन इट इज लॉन्गर, टू स्टे इन शेप एंड टू बी रेडी टू विन इन कॉम्पिटिशन, अब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो यहां से शुरू होगा. वी नीड टू सपोज, we need to follow this. Suppose ऐसा सेंटेंस हुआ ये, to stay in shape and be ready to win this competition, we need to follow this. आपका मेजर जो पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेंटेंस का, कौन सा है, ये है. इससे पहले ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है, फ्रेज जो है, ये क्या है, इंट्रोडक्टरी है. अब इसको आप अगर बिना कॉमा के यूज कर दोगे, सो देयर कैन बी कंफ्यूजन, वेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस.
अगर आपको पता है लैंग्वेज के बारे में, यू नो द नुएंसेस ऑफ लैंग्वेज वेरी वेल, सो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. बट द बिगिनर विल सर्टेनली गेट कंफ्यूज्ड. उसको पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस शुरू कहां से हो रहा है एग्जैक्टली, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कहां से. So this is merely introductory phrase. So whenever you use introductory phrase and it is longer, so it should be always separated by a comma. Next, ये जो मंथ डे नियर डे डे ईयर फॉर्मेट और इस तरह की जो फॉर्मेट्स होती हैं, उन सबको प्लेस में फिर स्मॉलर, फिर बिगर, फिर बिगेस्ट, इस तरह की जो प्लेसेस होती हैं, वो उन सबको भी आप क्या करते हो, कॉमा से ही सेपरेट करते हो. इनका एक नेक्स्ट में करवा देंगे आपको, पूरा सिर्फ पंक्चुएशन का ही रहेगा वो. अब ये ऑप्शनल भी है. समटाइम्स वी मे और मे नॉट यूज. इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस ओनली वेदर वी यूज कॉमा और नॉट. वो आपकी बात डिपेंड करती है आपके यूसेस पर. उसको जितना इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है. कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, परहैप्स, हाउ एवर, देयरफॉर, इंडीड, ये हाउ, हालांकि ये फॉर्मल राइटिंग में इनको कॉमा से डिटैच करना जरूरी होता है. हाउ एवर, सपोज हाउ एवर, इन सबको क्या कहते हैं एक्चुअली, ये बताइए. अच्छा, किसी को अगर पता हो तो, ग्रामर की लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं, स्पेसिफिकली ग्रामर की लैंग्वेज में इनको जो स्पेशल टर्म है, क्या कहते हैं, हाउ एवर, देयरफॉर, इंडीड. अनम्यूट करके कोई भी बता सकते हैं. Adverbs. Adverbs is not the specific word. They are either called adverbial और जो ग्रामर का जो करेक्ट वर्ड है वो क्या है, कंजंक्ट. अब ये एडवर्ब से क्वाइट डिफरेंट है. वेर एवर वी यूज हाउ एवर. अब हाउ एवर को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो. एक तो क्या कहते हैं, क्लॉजेस को क्लब करने में, जो क्लॉजेस होती हैं उनको क्लब करने में. और एक आपको यू यूज इन इन बिटवीन द सेंटेंस. हाउ एवर की पोजिशन कैसे रहती है, अगर आप स्टार्ट में यूज करते हो हाउ एवर कॉमा, देन फिर आई, हाउ एवर, then you carry the sentence, and then he did it comma however. This is how you have to use all the adverbials. This is applicable with this perhaps, therefore, indeed, or all such adverbials. They are not adverbs. Adverbs, there is a clause or there is a clear distinction between adverbial and adverbs. They are not used as adverbs. ठीक, यहां पे देख लीजिए इनको. और एक होता है आपका जो कंजंक्ट की तरह जब यूज होते हैं ना, जब आपके दो क्लॉजेस को क्लब करते हैं. ही डिड इट, सपोज, हाउ एवर आई डिड नॉट लाइक इट. दिस इज अ सेंटेंस, देयर इज लाइज अ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस. क्या मिस्टेक हो सकती है? Here, this adverbial is used as a conjunct, means it joins two different clauses. यहां पे clauses का नहीं था कुछ, यहां पे ये clauses को जोड़ रहा है. Whenever these adverbials join two clauses, वहां पे इनका specific meaning हो जाता है, specific usage हो जाता है. किसी को अगर इसमें कोई mistake दिख रही हो तो बताइए. Sir, comma. Where? So after however. Comma, definitely it will be there. Still there is mistake.
This uses, however, while joining two clauses, this usage is strictly incorrect. आपको क्या करना है, जब भी कंजंक्ट होता है तो ये कॉलन, सेमीकोलन, सॉरी, सेमीकोलन, he did it, सेमीकोलन, comma, then now it is perfect. And this in most of the cases it is wrongly used. However, हम बड़े नॉर्मली ऐसी बड़े हवा में यूज करते हैं इसको, खूब यूज करते हैं. But while writing a thesis, perhaps this kind of sentences have to be incorporated in your thesis. So what you will do, if you write this way in between two commas, and then you are using as a joining word. यहाँ पे ये adverbial है, यहाँ पर ये conjunct है. Conjunct मतलब क्या है? A kind of conjunction that joins two clauses. ये तो यहाँ पर सेमीकोलन प्लस however और these adverbials and then comma. तो ये बहुत बारीकी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए. आपकी थीसिस पूरी कंप्लीट पैकेज होता है आपकी मास्टरी ऑफ लैंग्वेज का. इट इज नॉट मेयरली योर रिसर्च वर्क, इट इज नॉट मेयरली द कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वर्क, इट इज द मैनिफेस्टो ऑफ योर मास्टरी ऑफ योर सब्जेक्ट और योर लैंग्वेज. अब सिंस यू आर गोइंग टू बी अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, प्राइमरली टीचर ऑफ लैंग्वेज, हम क्योंकि हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, तो हम लिटरेचर भी पढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या है, वी आर द टीचर ऑफ लैंग्वेज, देन वी आर टीचर ऑफ लिटरेचर. जो हमारी पहली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और थियोरिटिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि एज ए लैंग्वेज टीचर की, फिर आपकी है एज ए लिटरेचर और एज ए फिलोसोफर व्हाटसएवर. तो आपकी उस थीसिस में वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. ठीक, ये अभी इंट्रोड्यूस किया है, आगे करा देंगे इसको कंप्लीट, सेपरेट ही कराना पड़ेगा तभी होगा. कोटेशंस का भी आपको पहले बताया था, टेक्स्ट स्टाइलिंग की, मतलब एक तो ये टॉपिक था इसलिए सारा ये लेना पड़ रहा है. कोटेशंस इन टेक्स्ट, कोटेशंस के बारे में आपको पहले बता दिया था, है उसको, ये तो रिपीटेशन ही हो जाएगा. जो डबल और सिंगल कोटेशन के बारे में बताया था आपको, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, बट इट शुड बी स्ट्रिक्टली followed in an identical way. If you are using double quotation for certain kind of expression, you use throughout your thesis. If you use single quotation for certain expression, you use throughout your thesis. ऐसा नहीं होगा कि किसी सिंगल वर्ड के लिए कहीं पर आप डबल यूज कर रहे हो, कहीं पर सिंगल यूज कर रहे हो. बोथ आर करेक्ट प्रोवाइडेड दे आर completely or they are used in your thesis, throughout your thesis. ये ठीक, इसको दोबारा से करा देंगे. और इसके बारे में क्या बचा अभी, इटैलिक्स का थोड़ा सा बता देते हैं. वेयर वी हैव टू यूज इटैलिक्स. देखिए, एक तो आपके जितने भी टाइटल्स होंगे, वेयर एवर जो टाइटल ऑफ योर बुक, जहां जहां पे भी आप यूज करोगे उसको बिना कोटेशन मार्क के यूज करके आप सिंपली इटैलिक में ही यूज करिए, जितने भी टाइटल हैं. और कंसिस्टेंटली आपके जो भी नॉवल है, हैंडमेड्स टेल लिया आपने, वेयर एवर यू यूज दिस फ्रेज हैंडमेड्स टेल, वो आपकी इटैलिक में ही होनी चाहिए जहां पर भी. और जितने भी टाइटल्स ले रहे हो आप, जितनी बुक्स के टाइटल ले रहे हो, वो सब इटैलिक्स में होने चाहिए. एक आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा पूरी थीसिस का कि हाँ, वट एवर द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर देयर इन द थीसिस, दे आर टाइटल्स ओनली. तो वो क्लैरिटी दिखेगी आपकी. ये नहीं होगा कि कहीं पे वो आप, हाँ, हैंडमेड स्टेल आप नॉर्मल एक्सप्रेशन, नॉर्मल फ्रेज की तरह यूज कर रहे हो, देन दैट इज अनदर थिंग. बट व्हेन वी आर यूजिंग एज अ टाइटल ऑफ द बुक दैट यू आर रेफरिंग, सो वो आपका इटैलिक्स में ही होना चाहिए. उसको बोल्ड में और उसको डबल कोटेशन मार्क में इंसर्ट करने की कोई नीड नहीं है, उस तरह का कुछ करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद और क्या कहते हैं, हाँ, दूसरी चीज क्या है कि ये भी एक ऑप्शन होता है. इटैलिक्स इज ऑल्सो ऑप्शन ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और
double inverted comma for certain expressions. Certain expressions. Suppose some words are used as words. Some letters and words, they are used specifically. So we can italicize them so as to give the impression that these words are not in their conventional meaning. They are used in some developed or some connotative, having some connotative meaning. इस तरह का इंप्रेशन देने के लिए, जस्ट लाइक प्लीज प्रोनाउंस नोन. तो अब यहां पे क्या है, दिस वर्ड इज नॉट यूज्ड फॉर इट्स मीनिंग. दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ड ओनली. Here we don't regard the meaning of this word. We don't consider the meaning of this word. Rather, we treat it as a word only. So इसका स्पेशल यूसेज कर दिया हमने. यहां पर आपके सामने दो चॉइसेस थी, या तो आप इसको ऐसे लिखते, प्लीज प्रोनाउंस नोन. एक चॉइस और भी थी, प्लीज प्रोनाउंस नोन. और एक चॉइस आपकी ये है इसको इटैलिसाइज करने में. अब आप हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हो, हैंड रिटन लिख रहे हो, तो वहां पे तो इटैलिसाइज क्या करोगे आप. वहां पे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी सिंगल में या डबल में आप कर दो. जब आप हैंड रिटन कुछ दे रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, और वहां पे आपका मतलब है ये इस तरह इटैलिसाइजेशन से, लेकिन वो आपके नॉर्मल स्टाइल में आ गया, तो वो लगेगा नहीं. वहां पे क्या होगा, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंसर्ट कर दो उसको, वो बेहतर रहेगा. बट वाइल यू टाइपिंग योर थीसिस, यू हैव द ऑप्शंस. आपके सामने हैं वो ऑप्शंस इटैलिसाइज करने के. तो ये क्या है, चॉइसेस हैं इनमें से, वेदर यू यूज दिस काइंड ऑफ स्टाइल और दिस काइंड ऑफ स्टाइल और दिस काइंड ऑफ स्टाइल, बट you use it throughout your thesis consistently. So here we don't use this word for its meaning. We use this word for the word's sake only. Please pronounce this word without the first k. Yeah, this is how it connects the development of hola. We don't require the meaning of this word hola. What is it? We require it as a word only. ठीक. तो जब वर्ड्स को वर्ड्स की तरह आप ट्रीट करते हो, या वर्ड्स को स्पेशल यूसेज के लिए आप ट्रीट करते हो, सो वी यूज इटैलिक्स और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाटसएवर. आप हमने ये इन्वर्टेड कॉमा के बारे में एक चीज शायद बताई होगी कि आप एक स्टैंडर्ड बना लीजिए. वेन एवर यू यूज इन बिटवीन, जो कोटेशन थी रन इन कोटेशन जो थी ना, वो रन इन कोटेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करिए. कुछ सिंगल एक्सप्रेशंस के लिए, फ्रेजेस के लिए, या फिर कोई स्पेशल वर्ड्स का यूसेज है, वहां पे सिंगल के लिए यूज कर लिए. आपके थीसिस का स्टैंडर्ड बन जाएगा कि हाँ, जहां पर भी इन्होंने डबल स्टैंडर्ड, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, इट मींस दे हैव यूज्ड इट फॉर रन इन कोटेशन. ब्लॉक कोटेशन में तो कोई जरूरत है ही नहीं, रन इन कोटेशन में जरूरत पड़ती है. तो आपके हर जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज हो जाएगा. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जस्ट लाइक हेयर, या तो इसको ऐसे करिए, हाँ इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए, क्योंकि आपने इटैलिक्स कहाँ के लिए यूज किए हैं, टाइटल्स के लिए. जो आपका बुक का टाइटल है, वो सब जगह आपने बुक के टाइटल के लिए इटैलिक यूज किया हुआ है. आपने कहीं स्पेशल वर्ड्स के लिए ये क्या कहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है. कोटेशन के लिए, रन इन कोटेशन के लिए आपने क्या यूज किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है. तो ये आपका एक आइडेंटिकल हो जाएगा. आप इसको एक मतलब लिखने से पहले बना लीजिए, जहां जहां पे हमें वर्ड्स को वर्ड्स की तरह या स्पेशल यूज में यूज करना है, तो वहां पे सिंगल इन्वर्टेड यूज करना है. जहां पे कोटेशन, रन इन कोटेशन यूज करनी है, वहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है. जहां पे टाइटल्स यूज करना है, वहां पे इटैलिसाइज यूज करना है. बस ये आपका स्टैंडर्ड बन गया, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा. ठीक. दूसरा क्या है, टू डिफरेंशिएट वर्ड्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस. कोई फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड आप इंसर्ट कर रहे हो, तो उसको भी इटैलिसाइज कर सकते हो. अब यहाँ पे इटैलिसाइज के लिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप कर सकते हो. ये है.
These are some of the things for capitalization. Capitalization, देखिए capitalization sometimes it is used Z, Z and sometimes S. So these inconsistencies should not be reflected in your thesis. अगर S लिख रहे हो तो आप सब जगह S लिखिए, Z लिख रहे हो तो Z हर जगह लिखिए. कुछ टर्म्स के कैपिटलाइजेशन, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द न्यू सेंटेंस, ये आप जानती हो. द सब्जेक्ट नाउन ये आई, ये भी जानते हो आप. द नेम एंड द इनिशियल ऑफ द पीपल, आई के रिचर्डसन, ये सारे इनिशियल्स जो होंगे वो कैपिटल में होंगे. ए मंथ्स, मंथ्स के जो जितने भी मंथ्स होंगे वो सब कैपिटल में होंगे. डेज कैपिटल में होंगे. प्रॉपर नाउन्स, वट एवर प्रॉपर नाउन यू यूज, द प्लेस नेम, कुछ भी वो सब उसमें होंगे. म्यूजिकल नोट्स आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो आप उसको छोड़ दीजिए. अगर फिर भी जरूरत पड़ रही है तो आप कर सकते हो. एकेडमिक ग्रेड, ग्रेड अगर ग्रेडिंग करनी है आपको उसमें, या ऐसा शो करना किसी कोटेशन में ग्रेड ए बी, तो वो आप कैपिटल में कर सकते हो. ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती भी होंगी. कुछ ये क्या कहते हैं एब्रीविएशंस में, एब्रीविएशंस में बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है. पीएचडी है, कई बार हम क्या करते हैं ये पी एच और डी इस तरीके से भी लिख देते हैं. तो इन्होंने पीएचडी ना करी जो ऐसे लिख रहे हैं. फिर पीएचडी करने के लिए पहले इसको ऐसे लिखना बहुत जरूरी है, तब जाके कहीं पीएचडी होगी. ठीक, उसका आपको देना है क्या कहते हैं प्लूरल. तो प्लूरल में भी आपको जो स्मॉलर एस जो होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए, रादर देन उसको भी आप पी एच डी एंड देन एस, ये पी एच डी एंड देन एस, ये आपका कोई प्लूरल नहीं हुआ, ये पी एच डी एस हो गया. ये अगर आपको प्लूरल की तरह यूज करना है तो आपको वो एटीएम्स, तो अब ए टी एम एस अगर ऐसे यूज कर दोगे तो ये पूरा लगेगा कि एस इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ड्स दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एब्रिविएशन. तो बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है अगर आप ऐसे प्लूरल्स यूज करते हो तो. 1920s, अब 1920s समटाइम्स एस लुक्स लाइक 5, तो वो गलती ना हो जाए. 1920 एंड देन ये, अब ये रनिंग में आपको लगेगा कि 5 भी हो सकता है ये. तो अब आप लिख रहे हो 1920s, तो 1920s दिखना चाहिए कि 1920s ये 80s. ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कई बार अगर गलत हो गई और नजर पड़ गई वहीं पे तो वही इंप्रेशन हमारा डाउन हो जाएगा. इसके बाद में आती है कैपिटलाइजेशन ऑफ टर्म्स, जो आपके टाइटल्स होते हैं समटाइम्स, और आपके जो डेजिग्नेशंस होते हैं वो. तो ये यहाँ पे आप इनका जब भी आप लिखोगे मिस्टर मिसेस मैसर्स, ये डॉक्टर प्रोफेसर सर कैप्टन सीनेटर, जहां पे भी आपको यूज करना, आपको लिटरेचर में बहुत बार यूज करना पड़ेगा ये. कुछ आपके ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो ऑलवेज दे विल बी यूज्ड विद सर, कैप्टन, तो वो आपको अगर टाइटल में है वो कैप्टन, यू आर यूजिंग कैप्टन फॉर इट्स मीनिंग सेक, तब तो आप सी कैपिटल बनाइए. लेकिन वो कैप्टन टाइटल में है तब वो आपको सी कैपिटल बनाना पड़ेगा, ये चीज. ठीक, तो अभी तो आज के लिए तो इतने रहने देते हैं. Okay. Sir, sometimes when we write that doctor, DR, and we put that dot, so that red underline comes in that also. वो इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस ओनली, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. वो अमेरिकन और ब्रिटिश का है. अमेरिकन में डी आर विदाउट डॉट इज यूज्ड, ब्रिटिश में डी आर विदाउट डॉट इज यूज्ड. ये इनकंसिस्टेंसी बताया ना कि ये उसमें आती है आपके, आपका जो डिफॉल्ट सेटिंग है और द काइंड ऑफ यूसेज यू नो पर्सनली, you have seen it the way and then you expect the same kind of thing from the word ms word itself. वो चीजें तब आती हैं. वो सिर्फ क्या है कि चॉइस है आपकी अमेरिकन इंग्लिश की और ब्रिटिश इंग्लिश की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कोई सा भी यूज करिए, उसको कंसिस्टेंटली यूज करिए, बस इतनी बात है. Okay, here is a question.
first, it is for quotation, like if there is a block quotation on running quotation and in between there is a quotation, so what would be the expression? You have told earlier, but I have नहीं देखिए, if in a block quotation you are using a block quotation, in block quotation there comes a quotation within, so yes, that yes. can be very much used. In that way you can use double quotation mark, means inverted quotation mark safely. O- Okay, But so the problem comes when you are using in run in quotation and then there comes yet another quotation in between. So उसमें दो चीजें हैं. रन इन कोटेशन में जो कोटेशन विद इन कोटेशन स्टार्ट हो रही है वहीं से, ठीक. मैं आपको वैसे बताता हूँ. ब्लॉक कोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ब्लॉक कोटेशन में वेयर एवर यू यूज डबल इन्वर्टेड कॉमर्स एंड देन इट विल लुक दैट यू आर यूजिंग कोटेशन विद इन अ कोटेशन. रन इन कोटेशन में यहां से प्रॉब्लम आएगी. सपोज ये इतना पोर्शन आपका डबल कोटेशन का है, ठीक. रन इन कोटेशन है यहां तक, कहीं से भी समझ लीजिए, यहां तक समझ लीजिए, ठीक. अब आपकी ये जो पोर्शन है ये कोटेशन विद इन अ कोटेशन है, ठीक. तो आप क्या करिए, स्टार्टिंग में 3 कोटेशन मार्क आपके हो सकते हैं पॉसिबल. आपको लग रहा है कि ये अननेचुरल लगेंगे, अननेचुरल नहीं है. यू आर यूजिंग कोटेशन विद इन अ कोटेशन एंड द कोटेशन इज रन इन कोटेशन, सो दे आर वेरी मच नेचुरल. इधर 3 होंगे, यहां पर ये क्लोज हो गया. अब 3 का मतलब क्या है कि आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा ये और जो लास्ट वाला है ये किसके लिए, रन इन के लिए, रन इन कोटेशन के लिए, ठीक. एंड देन दिस सिंगल, दिस वन, दिस इज कोटेशन विद इन अ कोटेशन. ओके. कोटेशन विद इन अ कोटेशन, ठीक. अब कोटेशन विद इन अ कोटेशन के लिए भी एक स्टैंडर्ड बना लीजिए अपना कि कोटेशन विद इन कोटेशन विल बी इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. अगर उसको आप डबल में करोगे फिर कंफ्यूजन होगा. आपने ये कर लिया कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हमारी किसके लिए है, रन इन कोटेशन के लिए. एक तो हमने स्टैंडर्ड अपने लिए ये बना लिया. ये सेल्फ मेड स्टैंडर्ड्स हैं, ओके. ठीक. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 2 तरीके से हमने यूज किया. एक तो क्या किया, कोटेशन विद इन कोटेशन, ठीक. और एक क्या हुआ, सम स्पेशल वर्ड्स, उनके लिए यूज किया. 2 स्टैंडर्ड्स ही हो गए. इटैलिसाइजेशन वो हमने किसके लिए यूज किया है, बुक्स, बुक्स के लिए, बुक्स के टाइटल के लिए, ठीक. अब ये हमारे हो गए सेल्फ मेड स्टैंडर्ड्स हो गए. अब हम इनको क्या कंप्लीटली फोकस करते हैं. अब देखिए ये एक तो वेरिएशन ये है, फर्स्ट वेरिएशन, यानी स्टार्टिंग में आपके 3 ये इन्वर्टेड कॉमास हो सकते हैं पॉसिबल. एक हो सकता है लास्ट में, यहाँ पे आपने डबल इन्वर्टेड से स्टार्ट किया और सपोज करिए यहां से आपने ये कुछ और लिखा, यहां से आपने सिंगल इन ये कोटेशन विद इन ए कोटेशन यूज की है, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और वो क्या कहते हैं कहाँ पे खत्म हो रही है, जहां पे आपकी रन इन कोटेशन खत्म होती है. तो एक तो ये वाला इसके लिए, रन इन के लिए, और ये जो है वो इसके लिए. तो लास्ट में भी 3 कोटेशन मार्क पॉसिबल हो सकते हैं. ये दूसरा वेरिएशन. तीसरा क्या है, कोटेशन आपकी ये है रन इन कोटेशन, और इसमें आप बीच में कर रहे हो तो बीच में ये आप आ गई. ये इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ये कोटेशन विद इन कोटेशन, हाँ सिंगल कोट, ठीक. तो यहां पर आपके अगर दिखता है कहीं आपको पढ़ रहे हो, यू कम अक्रॉस दिस थिंग, क्या हाउ कम देयर आर 3 इन्वर्टेड कॉमास मार्क्स, तो दिस इज हाउ दे आर पॉसिबल. Suppose they introduce a quotation, run in quotation, and then in between the quotation there is one more quotation, quotation within a quotation that does not go up to the length of complete quotation, but it is simply quotation within a quotation. तो ये यहाँ पे आपकी कौन सी दे सकती, ये पूरी रन इन कोटेशन, ये रन इन कोटेशन ये है आपकी यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या थी इन बिटवीन. तो ये डायग्राम ऑफ 3 डायरीज, ये वाला.
and in block quotations we don't have to use the double quotation mark नहीं, like ब्लॉक in the कोटेशन में तो starting आप and ending. हाँ, ब्लॉक कोटेशन में अगर एंडिंग में आता है, सपोज करिए आपका इतना पोर्शन, ये आपका ब्लॉक कोटेशन का एग्जांपल ही दें पहले, तभी सपोज ये आपकी ब्लॉक कोटेशन है, दिस इज योर ब्लॉक कोटेशन एंड योर कोटेशन विद इन अ कोटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, यही है सपोज। ये तो वर्ड्स के लिए है, वर्ड्स के लिए बात नहीं चल रही है यहाँ पे चल रही है कोटेशन विद इन अ कोटेशन। तो सपोज इतना पोर्शन आपका ये है एस्थेटिक बट ऑल्सो एनालिसिस, ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये बिल्कुल हो सकता है, लास्ट में कोटेशन मार्क बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है ये, बिकॉज इट इज नॉट फॉर द होल कोटेशन, इट इज फॉर द कोटेशन विद इन अ कोटेशन। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपने स्टैंड बना लिया कि जब कोटेशन विद इन अ कोटेशन हम यूज करेंगे तभी सिंगल इन्वर्टेड यूज करेंगे, तो वो सेल्फ सेम स्टाइल आपका दिख जाएगा, सामने वाले को लग जाएगा कि हाँ क्यों इसने यहाँ पे यूज किया है। तो कोटेशन विद इन अ ब्लॉक कोटेशन कैन बी लाइक दिस, और अगर बीच में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये सपोज ये वाला पोर्शन आपने इतना ये यूज किया है ब्लॉक कोटेशन में, कोटेशन विद इन अ कोटेशन, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। हो ये भी हो सकता है कि ब्लॉक कोटेशन का जो स्टार्टिंग का कुछ लाइंस है ये यहाँ तक, ये आपकी कोटेशन विद इन कोटेशन है, तो यहाँ पर भी ऐसे भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तीनों ब्लॉक कोटेशन में। ऐसे ही आपके रन इन कोटेशन में, बस रन इन कोटेशन में क्या देखना है, कोटेशन विद इन अ कोटेशन विल बी इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सो एज टू लुक मेक इट लुक डिफरेंट, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बस ये है। Okay. ठीक। And another question, like after some quotation, if I use the writer's name in the bracket, like, suppose there is a writer and I'm using two different books of this particular writer. Okay, I'm citing. So while I'm citing one book, like the writer is same, so I can put the name. So how can I differentiate? I have to put the like title also. Here. If you are using two books of the same author and then you are using the writer name in inside quotation, ये तो कह रहे हो आप inside quotation में, so उस जहां पर आपने फर्स्ट सपोज करिए राइटर इज ए एंड देन ही हैज रिटन बी एंड सी, these two books. First time you are using B, so you use B written by A यहाँ पर, and then here C written by A, ये यहाँ पर. Okay. Otherwise वो आपका differentiate नहीं कर पाओगे कौन सी which book you are referring to. Or if I wanna make it brief, then can I use the publication year? Otherwise. Publication year थोड़ा रिस्की रह जाता है, उसको आप अवॉइड करिए. टाइटल के इनिशियल्स जो होते हैं उनको ही आप करिए, और नहीं तो आप नंबरिंग भी इनसाइड कोटेशन में नंबरिंग का भी बताया था आपको ऑप्शन एक, वो भी आप कर सकते हो. नहीं तो आप ये सेफर है ये. ओके. हाँ, इसको आप यू कैन गो विद दिस. और सर ये जैसे आर्यन टैगोर है तो सबसे पहले टैगोर लिखेंगे ना? बस टैगोर ही लिख, इनसाइड कोटेशन में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. टैगोर, हाँ, वो आपके जो पूरा तो उसमें आ जाएगा ना, रेफरेंसेस में जब आप रेफरेंसेस दे रहे हो वहां पे पूरा आ जाएगा. ये इनसाइड कोटेशन में यहाँ पे सपोज ये भी इनसाइड कोटेशन है, तो यहाँ पे आप सिर्फ लिख रहे हो टैगोर, और सपोज करिए सेम बुक इज बीइंग रिफर्ड टू ओवर एंड ओवर, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, टैगोर और पेज नंबर 127 जस्ट लाइक. तो ये आपकी क्या हुई, रन इन कोटेशन हो गई, ये सॉरी इनसाइड कोटेशन, इन टेक्स्ट साइटेशन सॉरी. ठीक, तो इस तरह से कर सकते हो. और अगर आपकी टैगोर की कुछ और बुक्स हैं तो फिर आप उनको मेंशन करिए. सपोज करिए यहाँ पे गीतांजलि, टैगोर, एक तो ये हो गई. ठीक, और यहाँ पर आपकी क्या है, सपोज करिए गौरा है और फिर टैगोर. तो ये आपका सेंस ऑफ डिस्टिंक्शन होनी चाहिए. अब सब जगह टैगोर लिखोगे सो वी वोंट बी एबल टू मेक एनी डिफरेंस विच बुक यू आर रेफरिंग टू, वेदर इट इज गीतांजलि और सम अदर बुक. तो वो आपको मेंशन करना है. एक तरीका ये है कि सिंपली नंबरिंग, कोई कंफ्यूजन ही नहीं.
वो तो आप अपने सुपरवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो कि हम किसको फॉलो करें, जो फीजिबल लगता है उनको, जो कंफर्टेबल लगता है उसको आप कर सकते हो। And one question is the title of the book. You were saying we have to write it in italics. Italics, If we put it in single inverted comma, can it go? It will go, but you have to use it throughout your thesis. वो जो सेफर ये रहता है उसको इटैलिक्स में कर दीजिए, वो अलग दिखना शुरू हो जाते हैं कि टाइटल्स ये हैं। May I ask something? Yes, sure. Sir, for example, not for example, sir, can I, अगर किसी शब्द का मैं एक तो उसका शाब्दिक अर्थ है, literal meaning, but if I am trying to use it to connote another meaning to it, an additional meaning, for example, the word provider. तो एक तो हो गया somebody who is a giver, but when we are talking about patriarchy or feminism, then the traditional role which is ascribed to a male is that of a provider. तो अगर मैं प्रोवाइडर शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ जो दो अर्थों के लिए एक ही समय पे स्टैंड कर रहा है, तो क्या मैं उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जस्ट टू एम्फसाइज इट यूज कर सकती हूँ? आप उसमें एक सेफर के लिए ये भी करिए कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए, और उसी पेज में फुटनोट में आप उसको लिख दीजिए कि द वर्ड इज यूज्ड विद दिस डिजायर्ड मीनिंग और विद दिस इंटेंडेड मीनिंग। वो सबसे सेफर रहेगा। जो हमें नोट्स बताए थे ना अभी, नोट्स का डबल स्पेस वाला जो था, वो यहीं पे काम आते हैं और हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। Since we are using this word with a specific meaning, so this specification should be given on the same page, otherwise it can be misinterpreted. Simply making it look in a single inverted comma won't give the impression that we intend to. अगर हमें उसको जो एक्सपर्ट है इम्प्लाइड रीडर की तरह ट्रीट करना है ना, इम्प्लाइड रीडर जानते हो आप, तो इम्प्लाइड रीडर की तरह अगर उसको ट्रीट करना है तो वो हमें इंप्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इट इज नॉट अ पीस ऑफ लिटरेचर दैट द पर्सन कैन कनोट एनी मीनिंग और ही कैन अंडरस्टैंड एनी मीनिंग. वी दिस इज अ फॉर्मल थिंग एंड देन वी इंटेंड टू वी मीन दिस वर्ड टू मीन दैट वे. सो उस वर्ड को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करके और नीचे नोट में उसको फुट नोट में उसी पेज में आप उसको कर दी कि बाय द स्पेशल मीनिंग स्पेशल यूसेज ऑफ दिस वर्ड आई मेंट दिस. वो सेफ हो जाएगा. ओके, थैंक यू.